हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज आम 4th और 5th मे 2025 करंट अफेयर डिस्कस करबा। तो फ्रेंड्स आज आपनकर दुईनो सेशन रे क्वेश्चन रही व्हिच रूलर ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य ना कनिष्क। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर आपन दियंतु मो लास्ट आपन आंसर करी। तो बर्तमान जीवा प्रथम प्रश्न आज हु एमंग द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट इंडिया in Russia's Victory Day parade on 9th May. Prime Minister Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, and Foreign Minister S. Jaishankar. So friends, our correct answer time by B है आपनकर Defense Minister Rajnath Singh. Defense Minister Rajnath Singh will represent India in Russia's Victory Day parade on 9th May. So friends, द्वितीय प्रश्न which agency's commercial arm in space E has launched the satellite bus as a service initiative to involve the private sector in satellite development. उपग्रह विकास रे घरोई क्षेत्र को शामिल करिया पाई केउ एजेंसी वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस सैटेलाइट बस आज सर्विस प्रयास आरंभ करिछि। ये करेक्ट आंसर आपन हेजिबो इसरो बी शुड बी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। The Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो जो व्यवसाय हुए ना अपन सैटेलाइट फैटेलाइट सब पठेबा को फॉरेन कंट्री चाहिए आम माध्यम सैटेलाइट पठेबो ना या हमर किसी प्रोडक्ट किनिबो डिफेंस प्रोडक्ट ए सब जिंस अपन इन स्पेस करे इते कमर्शियल विंग ऑफ इसरो मन रखिए। ये गुडा अपन क्वेश्चन भी ही पारे जे माने तो सैटेलाइट बस आज सर्विस बा स्पेस इनिशिएटिव प्रमोट माने स्टार्ट करिছে मन रखिए। तृतीय प्रश्न व्हिच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक विपर्यय विषय रे सूचना देवा पई सरकार क्यों आप लॉन्च करिसंती। तो आपन करेक्ट आंसर फ्रेंड्स है जो सचेता। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 27 April urged citizens to use the National Disaster Management Authority's Sachet mobile app which has been designed to provide real-time alert in local languages. So friends, चतुर्थ प्रश्न शिमिलपाल has been declared the second national park of which state after भितरकनिका। तो आपण मानकर स्टेट आपण जानि छथि तो ओडिसा ना ओडिसा का हमरा यदि आगुर हम शिमिलपाल को हम कहतले कि हमरा जातीय उद्यान रही छै ऑफिशियल उद्यान देखिया मान्यता तो एबे मिलुछि ना मन रखना। The Odisha government has recently declared Shimilpal Tiger Reserve as the state's second national park, following Bhitarkanika, making it the 107th national park in India. पंचम प्रश्न recently USA and British forces have carried out joint air strikes near which capital साना कार कैपिटल साना पाखरे यूएस और ब्रिटिश फोर्सेस तो जॉइंट एयर स्ट्राइक स्टार्ट करछन। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर होइबो येमेन ना येमेन हाउथी बेल मान कथा सुनछो से माने भी इजराइल रो से पाखरे जे ओडे एयरपोर्ट पाखो को तो मिसाइल छाड़िथिले ये सब इश्यू रहिछि। तो वर्तमान वर्ल्ड पूरा अलग अलग पेजेस देखिबा वार संभावना रहिछि हम इंडिया पाकिस्तान भी रहिछि देखिबा कोन होछि भगवान करो किसी युद्ध न हो सब समाधान नहीं चालू। 6 नंबर प्रश्न which two states recently celebrated their foundation day on 1st May। केउ दुईटी राज्य संप्रति मे 1 तारिख रे सेमानकर प्रतिष्ठा दिवस पालन करछन्ती। The correct answer should be C. Gujarat and Maharashtra should be your correct answer friends. The state foundation days of Maharashtra and Gujarat were jointly celebrated in the presence of Maharashtra Governor and Chancellor of Universities C.P. Radhakrishnan at Raj Bhavan, Mumbai on Thursday. So friends, आगु बढ़िया 7 नंबर प्रश्न as per the latest government data approximately how many OBC communities are there in the central list। तो फ्रेंड्स अराउंड हम जब पाइबा 2515। The central government's list of other backward classes include the approximately 2515 communities. This list is used for reservation in education and government jobs. The National Commission for Backward Classes determined the inclusion of the caste communities in central list of OBCs based on social, education, economic and other parameters. So friends, अष्टम प्रश्न where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the World Audiovisual Entertainment Summit WES on 1st May 2025। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आपनकर बी मुंबई शुड बी योर करेक्ट आंसर। मुंबई रही फ्रेंड्स मन रखते एग्जाम क्वेश्चन बनी पारे आपनकर। 9 नंबर प्रश्न प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री कॉन्क्लेव Lourenco is on a 4-day state visit to India from 1st May।
तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है जो अंगोला। तो अंगोला राष्ट्रपति देखिए अंगोलन प्रेसिडेंट विल होल्ड सेपरेट मीटिंग्स विथ पीएम मोदी and President Murmu. Both sides are expected to sign several agreements covering traditional medicine, agriculture and cultural cooperations. So friends, आगू बढ़िबा with which country has the US recently signed a strategic mineral agreement after a long delay? तो आपन करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यूक्रेन तो बहुत दिन पर यूक्रेन वार सिनेरियो रहिथिला तो बर्तन की गोटे आपन जोटा कि क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट आपन साइन है स्ट्रेटेजिक मिनरल एग्रीमेंट. The United States recently signed a strategic mineral agreement with Ukraine after a 2 months delay. This agreement finalized on 13th April 2025. हाँ मन रखा. तो फ्रेंड्स जो माने संडे एकेडमी सब्सक्राइब कर दियंतु ये सब हमर पेजेस रही छी स्मार्ट रही गला आशा बेच रही गला आपनकर खुशी बेच रही गला देन हमर ओडिसा फाउंडेशन बेच रही छी और लाइब्रेरी सब चीपेस्ट प्राइस से पाउछन जो माने जॉइन करिया पे जल्दी कांटेक्ट करंतु. 11th question is who has recently taken over as the new commander-in-chief of Udhampur based Northern Army Command. So friends, our correct answer is आपण पाइ जाउतन सी हेउची लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा. 12 number प्रश्न recently central government has approved a new highway from Shillong to Silchar at a cost of how many crore rupees? So friends, correct answer is जो आपनकर B तो पाखा 22,884 कोटी टंका आपनकर रही है 22,884 कोटी टंका आपनकर रही प्राइस है. Recently, the cabinet has approved to fix the fair and remunerative price of sugarcane at how many rupees per quintal for the year 2025-26. Sugarcane आखु को क्विंटल पीछा कितना टंका दर करछन सरकार जे देखिए बी 355 पर क्विंटल 355 टंका कर दिछन पर क्विंटल. The cabinet has approved the fair and remunerative price of the sugarcane for 2025-26. The sugar season at 355 per quintal. तो आगो जदि हम देखिबा ये आपनकर 340 टका थिला 15 टका बढ़िছে. So friends, आगो जबा for how long has India banned its airspace for Pakistan Airlines after the Pahalgam terror attack? The first correct answer should be B. Till 23rd May, as India banned its airspace for Pakistan Airlines after the Pahalgam terror attack. 15th question, recently the government has appointed whom as the chairman of the reconstituted National Security Advisor Board? The first correct answer should be C. Alok Joshi. Amid rising tensions with Pakistan, government reorganized NSAB with Alok Joshi as chairman and 7 new members. Who has recently announced a nationwide competition for the design of a new digital clock? The French correct answer should be the Indian Railways. The Indian Railways has announced a nationwide competition to design new digital clocks which are to be installed across all railway stations in the country. Railway has invited entries from the creative people. Recently, to which country India has donated 4.8 tons of rabies, tetanus, hepatitis B and influenza vaccines? The friends correct answer should be C. Afghanistan. India has donated 4.8 tons of vital vaccines to Afghanistan on 24th April 2025 to help improve its healthcare system and fight preventable diseases. The vaccine shipment includes doses for rabies, tetanus, hepatitis B, and influenza disease that still pose serious threats in the country. Afghanistan's health ministry welcomed the help, calling it a timely step towards better health and disease prevention. 18 number question, who has recently appointed Sanjay Jaiswal as the chairman of Estimate Committee for 2025-26? The correct answer should be D. Speaker Om Birla, friends. Honorable Speaker Om Birla, Lok Sabha has appointed Dr. Sanjay Jaiswal MP as the chairperson of the Committee of Estimates. ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं पर फ्रेंड्स मन रखिए. 19 number प्रश्न, GST collection has increased by 9.1% in the month of April to how many lakh crore rupees? So friends, GST collection बढ़ी थी. The correct answer is A. 2.09 lakh crore. After adjusting refunds, net GST collection rose to 9.1% to over 2.09 lakh crore in April. Who has recently taken over as the Chief of Integrated Defence Staff? The French correct answer is A. The Air Marshal Astur Dixit.
ये बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन 100% आपन एग्जाम पढ़ियो फ्रेंड्स। चीफ ऑफ इंटीरियर डिफेंस स्टाफ नहीं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। Air Marshal Ashutosh Dikshit assumed the appointment of CISC Air Marshal. They assumed the appointment at the headquarters Interior Defence Staff in New Delhi on 1st May 2025. He succeeded Lieutenant General J.P. Mathew, who superannuated on the 30 April 2025. तो फ्रेंड्स जो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपन एग्जाम पे। नंबर रखिए 9114000110 जेकोसी बैच आप जॉइन करे ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଲାଇଭ ଜଏନ୍ करे ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କଲ୍ କରିନେବେ ନମ୍ବରରେ। थैंक यू फ्रेंड्स। आज जो क्वेश्चन थिला डू नो सेशन रे व्हिच रूलर ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये करडा आपण आंसर आपण हे जो अशोका है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्पायर अशोका of the Mauryan dynasty. It was held at Pataliputra around 2050 BC. The council was chaired over by Moggaliputra Tisaha monarch. आज हम जो प्रश्न किया in which year did the Jallianwala Bagh massacre take place? निश्चित रूप से फ्रेंड्स correct answer कमेंट सेक्शन करिए। I must reply to all of you. Thank you all. ଆଉ ଆମର टेलीग्राम चैनल सब जॉइन कर जानते और पीडीएफ पाए पे। थैंक यू। और जो लाइक कर दो सब्सक्राइब करो जमार बुलियन फ्रेंड्स। थैंक यू।